next part that we're going to study in thermal section is thermal expansion. Thermal expansion mean when heat is given to the particle, their collision rate increases and they go further apart. When it comes to expansion, we'd know that solid expands the least, then liquid, then gas. Because the reason behind the thermal expansion and state of matter is that this is due to the strong intermolecular forces. Due to strong intermolecular solid expands the least and gas expands the most. There are certain examples that we keep into account when it comes to thermal expansion. That is, उसके advantages भी है and disadvantages भी है. When it comes to advantages, अब अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट भी अपने माइंड में रखना है and that is heat causes expansion and cooling causes contraction. और इन प्रॉपर्टीज को हम अपने बेनिफिट्स में यूज करते हैं. एडवांटेजेस में हमारे पास आ जाएगा इसका ही एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन. उसको हम यूज करते हैं अपने टेम्परेचर मेजरमेंट्स के लिए. बायोमेटालिक स्ट्रिप में यूज होता है. बायोमेटालिक स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ two different metals with different thermal expansion. जो ये बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है हमारे पास यूज आयरन में. ठीक है, जैसे हम इस्त्री वगैरह नहीं करते, आप उसमें क्लिक की आवाज सुनते होगे कि क्लिक होता है लाइट ऑन हो जाती है, क्लिक होता है लाइट ऑफ हो जाती है. उसमें बायोमेटालिक स्ट्रिप यूज हुई होती है. तो जब उस वो व्हेन इट इज एट इनफ हीट तो बायोमेटालिक स्ट्रिप बेंड हो जाती है और जब वो कूल डाउन होती है तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है. बायोमेटालिक स्ट्रिप लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स, कॉपर एंड इनवर्ट. कॉपर जो है उसकी एक्सपेंशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इनवर्ट, तो हमारे पास ऐसा कर्व आता है. ठीक है, अगर इनवर्ट की एक्सपेंशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉपर तो हमारे पास ऐसा जो था आना था. आपको शेप याद होनी चाहिए. व्हेन आप सॉरी लेट मी शेयर माय स्क्रीन आप एज अ होल. फ्रोज हो गए. आई नो आपको शो नहीं हो रही होगी, एक आप कुछ सेकंड. दिख रहे हैं? आपको वो नोट्स नहीं दिख रहे थे अभी जो whatever I was writing before?
Were you able to see all these things? No. Yeah, I was able to see this. हाँ, मैंने अभी स्क्रीन स्विच किया था। आई वाज शोइंग यू फ्रॉम द बुक कि हम कैसे थर्मल एक्सपेंशंस को यूज करते हैं। उसमें बायोमेटालिक स्ट्रिप हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल आती है। हमें ये याद रखना है कि दिस काइंड ऑफ कर्व वी गेट व्हेन टॉप मेटल एक्सपेंड्स मोर देन द बॉटम वन, और अगर बॉटम वन ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो हमारे पास ऐसा कर्व आएगा। ठीक है, शेप्स हमें याद होनी चाहिए। कॉपर की थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा, इट मींस इट कैन इजीली बी हीट अप एंड कूल डाउन। ठीक है, जिस सब्सटेंस की थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होती है इट मींस वो जल्दी से गर्म हो सकता है, जल्दी से ही ठंडा हो सकता है। बिकॉज वो मेटल है तो उसकी कंडक्टिविटी भी ऑब्वियसली ज्यादा होती है। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप, उसकी डेफिनेशन भी उन्होंने बुक में दी हुई है कि बायोमेटालिक स्ट्रिप इज डिजाइन टू बेंड एज इट गेट्स हॉट। द स्ट्रिप इज मेड ऑफ टू मेटल्स जॉइंट फॉर्मली टुगेदर, वन मेटल डिपेंड्स मच मोर देन द अदर। अब मैं अगेन आपको रिपीट करवा दूं कि आपको ये शेप्स याद होनी चाहिए कि आप, हमारे पास अगर बायोमेटालिक स्ट्रिप ये कूल स्टेट में है, ठीक है, ये वाली स्टेट कौन सी है, जब वो कूल कोल्ड स्टेट में है। और ये कब है, जब वो हीटेड फॉर्म में है। और चूंकि टॉप मटेरियल की एक्सपेंशन ज्यादा है तो हमें ऐसा कर्व मिलेगा। अगर बॉटम मटेरियल की एक्सपेंशन ज्यादा होती तो हमें ऐसा कर्व आता। यू मस्ट रिमेंबर दीज डायग्राम्स। ओके। सेकेंडली, एक्सपेंशन को हम लोग यूज कर सकते हैं जैसे जो ये ट्रेन के टायर्स होते हैं, दे आर पुट ऑन द ट्रैक। हम क्या करते हैं कि टायर्स को हीट अप करते हैं, दे एक्सपेंड्स एंड वी पुट इट ऑन द रेलवे ट्रैक, एंड व्हेन इट कूल्स डाउन तो उसमें एक फिट पोजीशन आ जाती है। ठीक हो गया। बाकी रिविट्स की भी एग्जांपल यूज होती हैं। रिविट्स आर यूज टू मेक स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट्स बिटवीन टू मटेरियल्स। तो अगेन हम इस रिविट को क्या करेंगे, हीट अप करेंगे तो ये एक्सपेंड करेगा, एंड ड्यू टू दैट एक्सपेंशन हम टू पाइप्स या जिनको भी हमने कनेक्शन करना है वी कैन पुट दैट इनसाइड, एंड व्हेन इट कूल्स डाउन तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है। ठीक है। सिमिलरली, ये उन्होंने एक एग्जांपल है कि नॉर्मल पोजीशन में दिस बॉल कैन नॉट गो थ्रू दिस लूप, बट व्हेन, अब द क्वेश्चन वुड अराइज कि whether you will heat up the ball or the ring for ball to pass through it, which would you heat, which one would you heat? किस Would you heat the ring or the ball for ball to pass through the ring? रिंग को नहीं हिट करेंगे, बॉल की शेप नहीं खराब हो जाएगी फिर? शेप की इतनी बात हम यहाँ पे करेंगे, हम रिंग को हीट अप मतलब करेंगे, वो बॉल को एक्सपेंड हिट करेगा, बॉल में करेंगे। से पास आउट कर जाएगी। अगर हम बॉल को हीट अप करेंगे तो बॉल मजीद एक्सपेंड करेगी, इट वुड नॉट पास थ्रू द रिंग। ठीक है। So these are few of the uses that we can put into use of the thermal expansion। उसके disadvantages ये होते हैं हमारे पास कि we need to put gaps in between the roads। इस तरह हम लोग जो है तो टाइप स्ट्रक्चर जो है वो रोड्स एंड ब्रिजेस में रखते हैं, सो दैट जब हीट हो तो एक्सपेंशन की वजह से रोड ब्रेक डाउन ना हो, बल्कि व्हेन एक्स्ट्रा एनर्जी हो तो दीज विल कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, और हमारे पास इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द रोड ये एक कनेक्शन जो है एक्सपेंशन यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको और जूम आउट कर देता हूँ। ये यू कुड सी दी स्पेसेस है। ठीक है। सो जब हीट अप होता है तो ये एक्सपेंड करेगी रोड और ये स्पेसेस इसमें फिल अप हो जाएंगी, एंड व्हेन द रोड विल जो है वो हमारे पास कूल डाउन होगी तो वापस इट विल गेट इन पोजीशन और वो टूटेगी नहीं। इस तरह के जो जॉइंट्स हैं रोड्स में भी होते हैं, ब्रिजेस में भी होते हैं, एंड दीज आर पुट देयर इन ऑर्डर टू अवॉइड द ब्रेकिंग ऑफ द ब्रिज और द रोड, सो दैट these could expand then the road, and the road would be saved of not breaking। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड जो होती है वो ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सॉलिड्स, एंड व्हेन इट कम्स टू gases expands the most, and here we have the reasons। Okay, solid expands least, liquids generally expands more than solids, and gas expands the most। ये जो expansions हैं इनको हम अपने benefits में भी यूज करते हैं और हमें disadvantages में भी जाते हैं। Thermal expansion के through we could easily measure out the temperature। If something is expanding, it means temperature ज़्यादा है। If something is contracting, that means temperature is low। Clear? हाँ जी।
The next topic would let us to find out how and how much, sorry, how much energy have we utilized to heat up a certain substance. There are two terms that we need to keep in our mind when it comes to thermal energy calculations, and that is heat capacity, and it is represented as capital C. And second term is specific heat capacity, and that is represented as small c. Both have approximately the same definitions. The only thing that differs in heat capacity and specific heat capacity is that, let me write a definition for the first one. Specific heat capacity is defined as amount of heat energy required to raise the temperature of a substance through 1 Kelvin और 1 डिग्री C. ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें वाटर है, मैंने इसमें थर्मोमीटर प्लेस किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से मैं उसको हीट दे रहा हूँ. जब थर्मोमीटर, फॉर एग्जाम्पल द वाटर टेम्परेचर इज 23 डिग्री, the amount of heat energy required to change the temperature of the liquid from 23 to 24, that we can find out that amount of heat energy would be represented as heat capacity. ठीक है, अगर हम यहाँ पे amount of substance को mention out कर दें, amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kilogram of a substance through 1 Kelvin, then it is represented as, or degree C, is known as specific heat capacity. The formula for heat capacity is given as heat capacity is equals to energy over change in temperature. This is heat energy and this is change in temperature. And specific heat capacity is represented as heat energy over mass into change in temperature. So specific heat capacity is equals to heat capacity over mass. ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास बन रहा है ये किसको शो कर रहा है, हीट कैपेसिटी को. इसकी जगह पे हमने हीट कैपेसिटी लिख दिया divided by mass. Specific heat capacity is given as heat capacity over mass. The unit for heat capacity is joules per Kelvin, and for specific heat capacity is joules per kilogram per Kelvin, or it could be written as joules kg minus 1 and Kelvin minus 1 is written as joule per Kelvin. Do you understand the meaning of heat capacity? Sorry? नहीं मुझे नहीं समझ आई, मुझे नहीं समझ आई. आपके पास एक बीकर है, ठीक है, अरे आपके पास कोई भी एक ब्लॉक ऑफ सब्सटेंस है, आप उसको हीट दे रहे हो, ठीक है, आप जब उसको हीट दोगे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ऐसे ही है. आपने उसको कितनी अच्छा, अमाउंट ऑफ हीट, आपने कितनी अमाउंट ऑफ उसको हीट दी उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए 1 डिग्री C के लिए, दैट वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ हीट कैपेसिटी.
ठीक है। जैसे मेरे पास एक एक मेटल का हाँ जी। रॉड है, इस इट इज 23 डिग्री सी, मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ उसको 24 डिग्री सी पे ले जाने के लिए कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। That we find with the help of heat capacity. The amount of heat energy required to raise the temperature of the substance through 1 Kelvin. सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, उस वो हम दैट इज व्हाट वी कॉल हीट कैपेसिटी। जैसे मुझे प्यास लग रही है, ठीक है। इन ऑर्डर टू क्वेंच माई थर्स्ट आई नीड 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है कि जी मैं 1 ग्लास पानी से मेरी प्यास बुझ जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे किसी कंटेनर का या किसी वाटर का या किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट वी मेजर विद द हेल्प ऑफ हीट कैपेसिटी, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। हाँ जी। अब मुझे बताएं क्या होता है हीट कैपेसिटी। टू मेजर, एक मिनट रुके। वट एवर कम्स टू योर माइंड, आई डोंट वांट द एग्जैक्ट वर्ड्स। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं आपको बताने लगी हूँ। जैसे मैंने वाटर को हीट करना है तो उसको हीट, जैसे हम्म उसका नॉर्मल टेम्परेचर अगर 0 डिग्री है तो मैंने उसको हम्म 1 डिग्री पे हीट करना है। तो हम्म मुझे उसकी जो हीट है उसको मेजर करने के लिए हीट कैपेसिटी की जरूरत होगी। हाँ, हीट आई कैपेसिटी विल हेल्प्स अस मेजर टू इट फाइंड आउट। विद हीट कैपेसिटी। हाँ जी। Moving on to the further formulas that we can use to find out. अब previously हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी इनटू टाइम, ठीक है, एंड सॉरी एनर्जी ओवर टाइम, सॉरी सॉरी सॉरी। So from here energy would be equals to power into time, ठीक है। Power could be found out with the formula voltage into current. This is voltage, this is current. So यहाँ से एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम और वी आई टी, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। एनर्जी इज इक्वल्स टू दिस एंड एनर्जी इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। एम किसको शो कर रहा है, मास को। मैं सी किसको शो कर रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। और ये चेंज इन टेम्परेचर। और हम इस फॉर्मूला को वी आई टी इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के हमें क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन। हमने बेसिकली इस फॉर्मूला को रीअरेंज किया, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना हमारे पास, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यू किसकी इक्वल आ जाएगा, एम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू टेम्परेचर। तो मैंने वो बस Q की जगह पे E लिख दिया, दैट्स योर चॉइस, आप उसको Q से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं E से, इन ऑर्डर टू मतलब इजी कंपैरिजंस के लिए हम उसको लिख सकते हैं। सो वी हैव द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। फर्स्ट वन इज हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी, मैं वर्ड इक्वेशंस लिख देता हूँ, हीट एनर्जी ओवर चेंज इन temperature. Second is specific heat capacity is equals to heat energy over mass into change in temperature. Third one is heat, sorry, specific heat capacity. Specific heat capacity is equals to heat capacity
over mass. फिर हमने क्या पढ़ा? Heat energy is equals to mass into specific heat capacity into change in temperature. Then we studied power into time is equals to mass into specific heat capacity into change in temperature. We also studied voltage multiplied by current multiplied by time is also equals to mass times specific heat capacity times change in temperature. You need to keep all these formulas in your mind in order to solve the mathematical questions that would come in your exams, right? ये आप इतनी जल्दी कैसे पढ़ाते हैं? The last and foremost important thing that you need to keep in your mind is the higher the heat capacity, longer it would take for a substance to heat up and cool down. यानी अगर something is taking longer than the other, अगर मेरे पास two substance हैं, उनमें से एक जल्दी गर्म या ठंडा हो रहा है और एक देर से गर्म या ठंडा हो रहा है, this would mean कि higher heat specific heat capacity किसकी होगी? Which is taking longer to heat up and cool down. ठीक है? और जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेस है, मेटल्स की मोस्टली हीट कैपेसिटी लेस होती है बिकॉज वो इजीली हीट अप एंड कूल डाउन हो जाते हैं. लिक्विड्स की हीट कैपेसिटीज जो है वो नॉर्मली ज्यादा होती है बिकॉज इट टेक्स लॉन्गर फॉर देम टू हीट अप एंड देन टू कूल डाउन. तो ये आपने ये पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि हीट कैपेसिटी का क्या रिलेशनशिप होता है विद दीज पॉइंट्स. ये थ्योरी के अंदर दीज क्वेश्चंस माइट कम, सो यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हीट कैपेसिटीज. सो जब हम हीटिंग कर्व एंड कूलिंग कर्व्स की भी बात करते हैं ना, वी नॉर्मली सी, लेट मी टेक यू देयर, कि हमारे पास सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट इज इजी. ठीक है? ये लेस स्टीप होता है, ये मोर स्टीप होता है. Solid to liquid is more steep than liquid to gas. Solid to liquid, sorry, liquid to gas again. You could see here, okay, this is taking much longer than this one. Why is that? Because solid to liquid में intermolecular forces को हम सिर्फ weak कर रहे होते हैं. ठीक है? From solid to liquid, intermolecular forces are only weakening. Whereas liquid to gas almost zero हो रही होती है. So it takes longer time for liquid in converting from liquid to gas than from solid to liquid. And the meaning वहां पे भी आपने अगेन इसी को इनकॉर्पोरेट करना है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का रोल होता है कि सॉलिड टू लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को सिर्फ वीक कर रहे होते हैं, whereas वहां से मूव करने में हम लोग उसको वी आर मूविंग कंप्लीटली, हम उसको रिमूव कर रहे होते हैं. क्लियर? बाकी हीटिंग कर्व्स एंड कूलिंग कर्व्स हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ लिए थे. ये हमने स्टेट्स को भी डिस्कस कर लिया था अपने नोट्स के अंदर. एंड ये कर्व्स आपको पता होना चाहिए. ये कर्व हमारे पास कब आते हैं इस टाइप के? जब इम्प्योर सब्सटेंस होता है. ठीक है? और शार्प एजेस हमारे पास कब आते हैं? व्हेन वी हैव प्योर सब्सटेंस. ये शार्प एजेस हैं, दिस मींस कि ये प्योर सब्सटेंस है. From melting and boiling point, we can identify this type of substance as well, because melting and boiling points fix होते हैं for a particular substances. यहाँ पे एक important point पे लिखा हुआ था
कि जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिक्विड एंड गैस स्टेट हमें आइडेंटिफाई भी करनी होती है कि अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट से बिलो के ऊपर वो सब्सटेंस क्या होगा, सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के इन बिटवीन वो क्या होगा, लिक्विड होगा। लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट से अबव पे वो किस फॉर्म में होगा, गैस में। तो अब ये आपने अपनी ये क्वेश्चंस अक्सर आते हैं कि आइडेंटिफाई वेदर सब्सटेंस वुड बी इन लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, राइट। अब वो जो evaporation के हमने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हुए थे, evaporation इज हेयर, यू कुड सी द puddles हेयर। ये puddles जितनी डीप होंगी evaporation रेट उतना कम होगा, ये puddles जितनी शेलो होंगी evaporation रेट उतना ही ज्यादा फास्टर होगा। जितनी ज्यादा सनलाइट होगी evaporation रेट उतना ही फास्टर होगा, जितनी ज्यादा हवा चल रही होगी evaporation रेट, द मोर द एयर द मोर द evaporation रेट वुड बी। ठीक है। बाकी इवेपोरेशन अकर्स ऑल द टाइम, ठीक है, सॉरी अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स। डिफरेंसेस हमने उनको पहले से पढ़ लिए हुए थे। एंड इवेपोरेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वी जस्ट डिस्कस्ड इट। आई थिंक सो दैट दैट वुड बी इनफ फॉर टुडे लेक्चर। ओके।